Good morning, students. Today we will revise our lesson which we have already completed. Now today I have selected chapter number 5 from your textbook, that is the fundamental unit of life, the cell. As you have already finished the chapter, and I hope that you have also studied it in a well manner, and in today's revision work we again come to know about the important aspects in connection with this chapter. जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि बायोलॉजी का गेटवे, बायोलॉजी का एंट्रांस जो होता है बायोलॉजी सब्जेक्ट का, वो सेल से ही होता है, क्योंकि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. एंड लाइफ मीन्स biology, as bio means life and logos means knowledge. Knowledge about the life, that means knowledge about the living organism. And as we have came to this point that cell is the structural and functional unit of the life. That is why without entering into the topic cell, we cannot understand, or we cannot imagine to understand about the subject biology. And in the last when we have started the topic, when we have studied the topic, at that time we have discussed a lot of things in this chapter. Now once again we have to revise all those things which are very important, and without giving them once again a focus, उस पर एक और नज़र हमें डालना है, ताकि हमें जो चीज़ें हमने छोड़ दिया था या जिन चीज़ों को हमने निगलेक्ट कर दिया था, या आपने उस वीडियो को देखने के समय उस दौरान जो है आप उस पर ध्यान नहीं दिए थे, वो अब आपका फिर एक मतलब रिवीजन में वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी. या आपने अगर पढ़ा है, आपने कुछ और अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश की होगी, तो और कुछ चीज़ें इसमें लास्ट जो पढ़ाया गया था टॉपिक, उसमें अगर कोई कमी रह गई होगी तो वो इसमें हम लोग उसको पूरा कर लेंगे, कोशिश यही रहेगी. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं. देखिए, इस टॉपिक को हम लोग को 2 पार्ट में कंप्लीट करना है. रिवीजन का जो वर्क होगा, तो आज का ये जो पार्ट 1 रहेगा, आज जो रिवीजन हम लोग करेंगे पार्ट 1. इस पार्ट 1 में अभी जो रिवाइज करना चाहते हैं हम लोग, वो है बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल, उसके बाद इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन रिलेटेड विद द डिस्कवरी ऑफ सेल, और उसके बाद सेल शेप और साइज के बारे में बात करेंगे. बेसिक कंसेप्ट मीन्स यू हैव सीन ए लॉट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स surrounding you, from the very smaller one to the larger one, like grasses to the people tree, like bacteria to the human, to whale. At that extent you have seen a lot of diversity, a lot of differences among the different types of organisms. The organisms may be a smaller one, the organisms may be a larger one, the organisms may be unicellular, the organism may be multicellular. In this context, you have seen that maybe the organism is smaller one, larger one, unicellular, multicellular, prokaryotic, eukaryotic, whatever may be the level of organization in purview of the cell structure. The basic thing is that all the organisms, all the living organisms and their body made up of the cell. That means cell is the structural, that is why it is known as the cell is the structural and functional unit of the life. Here when we are talking about the structure, that means the body
organized. Structure means the organization part of the body. Suppose if we're talking about our cells, अगर हम लोग अपनी बातें करें या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ले, अगर अपनी बात करते हैं तो अब समझ लीजिए कि एक ह्यूमन है, हमारे पास कई ऑर्गन्स हैं, कई बॉडी के पार्ट्स हैं, तब एक कंप्लीट बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो हर इस पार्ट का अगर आप जायज़ा लें, अगर इसको आप देखें तो आपको ये समझ में आएगी, हाथ है, पैर है, आँखें हैं, नाक है, कान है ना, ज़बान है, अंदर का फिर बहुत सारा सिस्टम है जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव, ये सारे सिस्टम्स या ये ऑर्गन, ये पार्ट ऑफ द बॉडी, ये सारे चीज़ें जो हैं, ये सब किन चीज़ों के बना है? ये सेल का बना है। तो स्ट्रक्चरली ऑल द ऑर्गेनिज्म, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसा कह सकते हैं हम कि बिल्डिंग जो बने है, जो इमारत खड़ी है बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का, ये इमारत किस चीज़ पर खड़ी है, ये बिल्डिंग किस चीज़ पर खड़ी है? तो सेल पे, सेल का ही बना हुआ है। तो ये तो उसका स्ट्रक्चर हो गया। अब उस बिल्डिंग के द्वारा, उस ऑर्गेनाइज्ड बॉडी के द्वारा व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म, क्या फंक्शंस उसके द्वारा हो रहे हैं? ये हमारा बॉडी का पार्ट्स या ऑर्गन या सिस्टम किस तरह से डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को अंजाम दे रहा है, डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज़ को कर रहा है। ये सारे एक्टिविटीज़, ये सारे फंक्शंस का भी जो है यूनिट सेल है, यानी कि सेल के द्वारा ही बॉडी बनेगा किसी ऑर्गेनिज्म का, और सेल के द्वारा ही वो सारे ऑर्गेनिजम्स के एक बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो होंगे। चाहे वो एक माने हमारा मूवमेंट है, हमारा लोकोमोशन है, न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, या मॉलिक्यूलर लेवल पे जो सेल के अंदर जो है फंक्शंस चल रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ऑल दीज एक्टिविटीज़ performed by only cell, and the organization of the body is also based on the cell. This is the basic concept of the cell. अब मैंने पहले ही कहा कि अगर आप इस सब्जेक्ट को यानी कि बायोलॉजी को अगर पढ़ना चाहेंगे तो बगैर सेल का, सेल इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द सब्जेक्ट बायोलॉजी। बगैर सेल अगर आप किसी स्टूडेंट ने नहीं कुछ पढ़ा है, बायोलॉजी के बारे में नहीं जानता है, और उसे अगर बायोलॉजी के बारे में जानना है तो सबसे पहला पाठ जो उसको पढ़ाया जाएगा, लेसन जो उसको पढ़ाया जाएगा, दैट इज द सेल। इसलिए कि ये पूरा आधार है। तो किस तरह से सेल का डिस्कवरी हुआ था ये आप इससे पहले ये जान चुके हैं, और आज भी इसको हम दोबारा दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं इसको, कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड जो सारे इवेंट्स हैं वो आप देखेंगे, वो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। उसमें आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से उसमें प्रोग्रेस हुआ। तो उस प्रोग्रेस में जो डिस्कवरी में जो प्रोग्रेस हुआ वो माइक्रोस्कोप के मॉडर्नाइजेशन, और जितना हाईटेक उसमें हुआ, उसमें जितना ज़्यादा डिवाइस अच्छे से अच्छा हुआ, अब सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप जिसके द्वारा जो है सेल का आविष्कार हुआ, दैट इज सेल्फ डिज़ाइंड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने खुद उसको बनाया था, और उसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में रखा जाता है। एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था जिसमें उन्होंने बार्क से के स्लाइस जैसे कटे हुए, जिस तरह से ब्रेड को आप इस तरह से काटते हैं, एक ब्रेड का एक बड़ा सा टुकड़ा है, और इस टुकड़े को अगर इस तरह से आप पीस करते हैं तो दैट इज़ द स्लाइस। तो इस हर एक इस टुकड़े को इस तरह से उन्होंने बार्क का स्लाइस करने के बाद जो ये डेड सेल था वो, इसलिए कि बार्क जो है स्टेम का जो पार्ट है वहाँ से निकाल करके उससे कॉर्क बनाया जाता, और उसी कॉर्क के स्लाइस को काटने के बाद ये उन्होंने सबसे पहले उसका ऑब्जर्वेशन किया। तो उन्होंने हनी कॉम के जैसा उसमें स्ट्रक्चर देखा, जिसका उन्होंने नाम कंपार्टमेंट दिया, चेम्बर रखा या सेल रखा, और इस तरह से सेल का आविष्कार हुआ। ये जो स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया था वो बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर था, इस तरह का स्ट्रक्चर था, इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। तो इस स्ट्रक्चर
को उन्होंने हर एक अलग अलग जो ये चेम्बर था, ये कंपार्टमेंट था, इसको उन्होंने सेल या कंपार्टमेंट कहा। इस तरह से बाय चांस सेल हैज़ डिस्कवर्ड इन 1665। इसके बाद आप देखेंगे कि जो बहुत सारे जो इवेंट्स है सेल से रिलेटेड या लिविंग सेल का सबसे पहले 1674 में फिर जब ऑब्जर्वेशन लोइनहोइक ने किया तो फिर उन्होंने जो देखा सेल वो लिविंग सेल को देखा उन्होंने। फर्स्ट टाइम ही was the person who observed the living cells under his own made microscope। फिर उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा तो उनका कुछ माइक्रोस्कोप जो है रॉबर्ट हुक से कुछ इम्प्रूव्ड था, तो उन्होंने कुछ और चीज़ों को देखने का मैंने क्रेडिट लिया। इस प्रकार से आप देखें कि जिस तरह से माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट हुआ उस तरह से सेल और उससे अंदर के स्ट्रक्चर जो है उससे रिलेटेड चीज़ों का सामने आया, हम लोगों के सामने दिखाई दिया। अब आप सबसे पहले ये देख लें कि सेल के आविष्कार के बाद और कई चीज़ें जो हैं सेल से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसका किस तरह से आविष्कार हुआ और कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट ईयर है उससे सेल से रिलेटेड कौन सारे इवेंट है इम्पॉर्टेंट, उसको हम लोग एक नज़र यहाँ देख लें। डियर स्टूडेंट्स, आइए इतिहास के आईने में देखा जाए कि किस तरह से सेल के डिस्कवरी और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए। मैंने जैसा कि पहले कहा आपको कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में इम्प्रूवमेंट आया वैसे वैसे सेल के बारे में अधिक जानकारी मिलने लगा, क्योंकि और बहुत बेहतर ढंग से उसका ऑब्जर्वेशन हुआ। जैसा कि आपको मालूम है कि रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट हु हैज़ डिस्कवर्ड सेल। आफ्टर दैट द सेकंड इम्पॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन 1900 sorry, I am very extremely sorry, not 1900, in 1674 the first time Lowenhoek observed living cells by improved microscope. After that, in the year 1831, Robert Brown, the scientist who has discovered very important part of the cell. अंडरस्टैंड, मैंने कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, ये आपको रिवाइज मैं कराना चाह रहा हूँ। शायद आपके मैंने होगा आपको ये याद, ये सारे मैंने सिर्फ साइंटिस्ट का नाम और ईयरली मेंशन किया है, मैंने कोई इवेंट मेंशन नहीं किया। मैं इवेंट बता रहा हूँ आपको ज़बानी, और आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप खुद भी यू ट्राई टू गेस एंड यू शुड टेल what are the answer, what are the important events in related, like when we talking about the Lowenhoek who first observed by improved microscope the living cells first time. After that what will happen in 1831? 1831 में क्या हुआ? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? रॉबर्ट ब्राउन हैज़ डिस्कवर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। अब आप कहेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, तो आप बताएं सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको कौन सा लगता है? तो आप कहेंगे कि न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, एज बिकॉज न्यूक्लियस इज द पार्ट दैट इज द कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द सेल, दैट इज द पार्ट वेयर फ्रॉम all the metabolic activities, or may you tell in a simple way that all the activities, all the functions will be controlled by the nucleus. And above all, nucleus is the place where genetic material is present that will ensure the, now I will not tell anything at all, may you complete it. क्यों से जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ? दैट डिटरमाइन द पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ इट विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ये डिटरमाइन करने वाला जो चीज़ होता है जेनेटिक मटेरियल, वो कहाँ रहता है? दैट इज प्रेजेंट इन द, दैट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस।
तो इन दिस वे रॉबर्ट ब्राउन हैज़ डिस्कवर्ड। अब आइए प्रकेंजी इन 1839, व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या किया? ही हैज़ डिस्कवर्ड द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, सेल के फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसे कहा गया? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसे कहा गया? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, that is the protoplasm, that is the protoplasm, that means what is the protoplasm? आप इसको इस तरह समझिए कि स्ट्रक्चरली अगर आप सेल को देखेंगे तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म कौन सा पार्ट है? जब आप किसी सेल को देखते हैं, सपोज कीजिए कि ये एक सेल है, इस सेल को आपने देखा, ऑब्जर्वेशन किया, इसका डायग्राम देखा, सेल के अंदर की सारी चीज़ें, ये एक मेम्ब्रेन आपको दिखाई दिया। इस मेम्ब्रेन के बाद अगर ये प्लांट सेल होता तो इसमें एक और ये सेल वाल रहता है ना, तो इसके अंदर का ये सेल वाल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन, ये जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन है इस सेल के, ये सारे सेल के अंदर के लिमिटिंग मेम्ब्रेन के अंदर के सारे कंटेंट जो हैं, अब उसमें जो भी है, चाहे साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियस हो, या डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज हो, ये सारे जो हैं चीज़ जो है, ऑल दिस आर नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। ये सारा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब इसी को हम लोग जो है प्रोटोप्लाज्म को फिर अगेन हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस अलग अलग कर देते हैं अगर इसे, है ना। तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस को यहाँ इसको अलग कर दिए, न्यूक्लियस को, कि न्यूक्लियस को अगर इस तरह से दिखाए, न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यू विल नो अबाउट द न्यूक्लियस, देयर आर न्यूक्लियर पोर ऑल्सो, दिस इज नॉट द कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन, देयर आर गैप्स, एंड within that there are presence of nucleolus and chromatin. This is the nucleus. When we're talking nucleus and the other part of the protoplasm, that is the cytoplasm, that means nucleus plus cytoplasm, all these parts, cytoplasm, where the important organelles are present. Understand? And that is why we may call the cytoplasmic organelles and we may also call the cell organelle. हम दोनों बात कहते हैं। अगर हम प्रोटोप्लाज्म को ले लें तो ये सारे सेल ऑर्गेनेली हो गए। अगर हम साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को अगर इसमें से अलग कर दें तो ये बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है सेल का वो क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म कहलाएगा। और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इट इज़ द प्रोटोप्लाज्म। इसका डिस्कवरी इसको प्रकंजी ने 1839 में किया और इसको उन्होंने कहा कि दिस इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ या फिजिकल बेसिस ऑफ सेल। समझे? तो ये हो गया। इसके बाद आइए इन 1838 and 1839 the two scientists, one of them is botanist, that means the botany means the study of plants and zoology means study of animals. So these two scientists, botanist and zoologist, discovered the cell theory, the important event in the history of cell. What is the basic concept of the cell theory? The basic concept of the cell theory is that all the living organisms are made up by the cells and its component parts. सारे living organisms सेल के बने हैं या उसके प्रोडक्ट्स के बने हैं। ये इसका एक बेसिक कंसेप्ट था। लेकिन केवल इस बेसिक कंसेप्ट को अगर हम देखें तो उसके आधार पे फिर वर्चू ने उसमें एक बहुत बड़ी चेंजिंग लाया। वो चेंजिंग क्या लाया उन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। सेल्यूला के मतलब यहाँ पे सेल होता है। इसी को सबसे पहले ये जो कंपार्टमेंट जो रॉबर्ट हुक ने कहा था उसके सेल्यूला का ही उन्होंने नाम दिया था, जिससे बाद में इंग्लिश में उसका नाम सेल पड़ा। तो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, दैट मीन्स all cells
arises from pre-existing cell, यानी कि सेल, हर एक सेल जो है अपने पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकल के आएगा। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था सेल थ्योरी में, उन्होंने इसको एडिशन किया। तो सेल थ्योरी आफ्टर द proposed by the cell theory by the Schleiden and so on, now it is also contain this point that not only the living organisms are made from the cell and its product, but also each cell arises from its pre-existing cell। तो ये सेंटेंस जो है उसमें और इस थ्योरी में इजाफा किया गया और उसी को ये लैंग्वेज यहाँ पर दिया है। उसके बाद बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ, मैंने पहले ही आपको कहा कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में डेवलपमेंट होते रहा वैसे वैसे सेल के ऑब्जर्वेशन में भी डेवलपमेंट हुआ और अधिक से अधिक उसके बारे में जानकारी मिली। अब नोल एंड रस्का जब 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया, व्हेन they discovered the electron microscope, then there is a lot of changing takes place in the structure and in the overall detailed view of the cell. After discovery of the electron microscope, now ultra structure, जिसे आपने देखा होगा, किताबों में भी आपने पढ़ा होगा कि हम लोग कहते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताइए, है ना, प्लांट सेल का एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर का डायग्राम बना के दिखाइए, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाइए, प्लास्टिड का अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताइए। तो ये व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट व्हेन दैट पार्ट ऑफ द सेल और द एंटायर सेल व्हेन विल observed by under the electron microscope, what are the structure? That is the ultra structure। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद जो स्ट्रक्चर सामने दिखाई दे रहा है, जो ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, उसी को अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो मैं यहाँ तक आपको बताया, मैंने इवेंट नहीं लिखा था ताकि आप खुद से इस बात को समझने का प्रयास करें कि कौन कौन सा ये इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए, ये सारी घटनाएं सेल से रिलेटेड थी जो आपको बताई गई। In a very brief manner, you may here see and look the important points from the cell theory. Number one, which was originally proposed by Schleiden and so on. All organisms are composed of one or more cell. And again, when Virtue added now the concept of the cell theory, all cells come from pre-existing cells, that vital functions of an organism occur within cells. And now after that, here is a simple definition that you will know that cell is the structural functional. Here more point here is added. The cell is the basic structural, functional and biological unit of all known living organism. Structure माने उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ये सेल के ऊपर डिपेंड करता है। सारे जो ऑर्गेनाइज बॉडी है वो अपना जो वर्क करेंगे, जो अपना वो फंक्शन करते हैं, किस पे डिपेंड करता है? सेल पे करता है डिपेंड। यानी कि विदाउट सेल देयर इज नो एनी फंक्शन, विदाउट सेल देयर इज नो बॉडी बिल्डिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इज नो लाइफ एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम ऐसा कहें कि तो गलत ना होगा कि सेल के बिना माने उसका लाइफ ही नहीं है। Understand? So this is the some important points from the cell theory and the definition of the cell. Now come to know about that you have an idea that there are diversity in the living organisms. There is a vast and huge numbers of species, both from the plants and animals. All are made up of by the cells. The cells that compose the body may be a single or maybe more than one, and that is why depending upon the number of cells, the organisms may be classified into the two categories. The first one is the unicellular and the second one is the multicellular. So just
when we talking about the depending upon the number of cells, that means the number of cells. So that is maybe the unicellular and the multicellular. Unicellular and multicellular. Multicellular. Uni means one, single. एक सेल से ऑर्गेनाइजेशन हुआ बॉडी का. अब मल्टी मोर देन वन, बहुत सारे, ढेर सारे. समझे? तो यहाँ पे ये मल्टीसेलुलर. अब इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है. ठीक है. उसके बाद आपने देखा होगा पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है, अमीबा इसका एग्जाम्पल है, अमीबा इसका एग्जाम्पल है ना. उसके बाद क्लामाइडोमोनस, इसको आपने देखा होगा, क्लामाइडोमोनस इसके एग्जाम्पल्स है. ठीक है. आप मोनेरा ग्रुप में अगर आप चले जाएं तो उसमें आपने देखा होगा जितने सारे एग्जाम्पल, चूँकि मोनेरा जो आपने बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा, मैं उसको आपको शायद याद होगा कि मोनेरा जो है फर्स्ट किंगडम जो था, उस किंगडम में आपने क्या देखा था, मोनेरा का कैरेक्टराइजेशन जब आपने किया होगा तो फर्स्ट जो था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म whose body is composed with a single cell and prokaryotic, that means unicellular prokaryotic organization are all are put under the kingdom मोनेरा. तो उस मोनेरा के सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें रख सकते हैं. और उसके बाद मोनेरा के बाद के जितना भी आप किंगडम आपने देखा वो सारा जो है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी था फंगी में, कुछ उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी फंगी किंगडम में. The kingdom fungi not only comprising the multicellular organism but that also comprising some unicellular organisms like the yeast when we talking about the unicellular example. तो आप इसमें सारे एग्जाम्पल्स आप उसमें दे सकते हैं, मैंने ऑल द. इसलिए हम लोग कभी कभी इस तरह के एग्जाम्पल्स में हायर एनिमल्स और प्लांट्स भी रख सकते हैं, या प्लांट्स एंड अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. समझे? जिसमें आपका प्लांट्स भी हो गया, एनिमल्स भी हो गया, ह्यूमन भी हो गया, ऑल आर दिस मल्टीसेल्युलर. तो ये आपने देखा कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स द ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. नाउ यहाँ पे एक साइज और शेप के बारे में जब आप बात करेंगे, मैं उसको भी थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दे रहा हूँ. साइज और शेप की जब आप बात करते हैं तो इसमें देखिए एक बात याद रखेंगे आपने, अगर आप टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़े होंगे ध्यान से, तो टेक्स्ट बुक में जो है क्लियर ये एक पैराग्राफ में पूरा इसको दिया गया है, आप उसको देखेंगे कि द साइज एंड शेप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द साइज एंड शेप ऑफ द सेल दैट इज कोरिलेटेड विद द फंक्शंस. ये फंक्शंस के अनुसार किसी भी सेल का साइज होता है, शेप होता है. ये अब एक बहुत बड़ा मैमथ स्पेसिस एलिफेंट का ले लीजिए, या ह्यूमन का अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, या किसी और मल्टीसेलुलर बड़े ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल ले लीजिए. तो ऐसा नहीं है कि वो सारे उसमें जो सेल्स होंगे वो जिस तरह से कि माने नर्व सेल है बहुत लंबा है ना, तो वो ऐसा रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं. उसमें ऐसे भी सेल आपको मिलेंगे जिसको आप माइक्रोमीटर में मेज़र करते हैं. तो ये साइज इज़ नॉट, साइज इज़ कोरिलेटेड विद द फंक्शन एंड शेप इज़ ऑल्सो कोरिलेटेड विद द फंक्शन. आपने जो देखा है बहुत सारा डिफरेंट शेप्स सेल का, वो उसके फंक्शन से रिलेशन रखता है. कैसा फंक्शन होगा, उस सेल के द्वारा कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, उसके आधार पर उसका शेप होता है. तो इस बुनियाद पर सेल के साइज और शेप में काफ़ी वेरिएशन से, जो आपने देखा बैक्टीरिया जैसे कि 0.5 माइक्रोमीटर है, उससे लेकर के फिर आप कई मीटर तक का सेल आपको मिलेगा. तो इस प्रकार से आप सेल के साइज को देख सकते हैं. और सेल के शेप में आप ओवल शेप है, एग शेप है, स्फेरिकल है ना, पॉलीगनल है, इस तरह से और भी कई डिफरेंट शेप्स आपको मिलेंगे. आइए अब इसके बाद हम लोग जो है कोर ऑफ द टॉपिक पे आते हैं.
यानी कि सेल जो है कंपोज्ड जो हुआ है वो किस तरह से हुआ है, सेल के कौन कौन से कंपोनेंट पार्ट्स हैं। एक डायग्राम यहाँ पे रफ डायग्राम अगर आप देखें तो आप उस रफ डायग्राम के आधार पे may you try to understand, and depending upon this अगर आप इस डायग्राम को देखें, एक सिंपल सा डायग्राम है जिसमें देखिए एक इसमें और इस तरह का, ये इस तरह का दिखाया जाता है। उसके बाद ये देखिए इस डायग्राम में आप अगर देखेंगे तो हम लोग बात कर रहे हैं, पहले हम अपने टॉपिक को लिखे, यहाँ पे इस पॉइंट्स को लिखे जिस पे हम लोग अभी समझने का कोशिश कर रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सेल, एक सेल के कंपोनेंट पार्ट क्या है ना। इसमें कई पार्ट्स आप देखेंगे, देखिए इसमें कई पार्ट्स आप देखेंगे। एक पोर्शन आप देखेंगे डेंसर पार्ट विथ इन द न्यूक्लियस विच इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। अंडरस्टैंड, द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन that separate it from cytoplasm, but within the nucleus there is some denser part you may look in the peripheral region or elsewhere which is not surrounded by a membrane. And after that may you look here also chromatin fibers, chromatin network in tangled masses. Understand, that is the chromatin network. And you may also see here the fluid or the matrix of the nucleus within which all these component parts are present. Understand, within which all the component parts are present. और उस मैट्रिक्स को देखेंगे आप, उस फ्लूइड सब्सटेंसेस को देखेंगे आप न्यूक्लियस के अंदर, जिसमें सारे चीज़ इम्बेडेड हैं, चाहे वो क्रोमैटिन थ्रेड्स हों या फिर ये न्यूक्लियोलस हों, ये सारे चीज़ें हैं। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। तो सेल के जो हम लोग कंपोनेंट पार्ट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, हाउ सेल कंपोज्ड, किस तरह से सेल बना है, कौन कौन सारी चीज़ें उसमें हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। तो नाउ लुक हियर, दिस इज द outermost part, that is the outermost boundary. When we talking about the plant cell, then the outermost boundary is the cell wall. ये जो अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो जो सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होगा सेल वॉल कहलाएगा। अब मैंने इसको प्लांट सेल के कंसेप्ट से ही इस डायग्राम को यहाँ पर रखा है, क्योंकि प्लांट सेल में द न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट विथ इन द सेंट्रल पार्ट, इट मे बी प्रेजेंट विथ इन द पेरिफेरल, पेरिफेरल बोलते हैं इसके किनारे किनारे के पार्ट को। तो पेरिफेरल रीजन में भी न्यूक्लियस रहता है, अधिकतर केसेस में ऐसा ही है। जबकि एनिमल सेल में आप जब देखेंगे तो ये न्यूक्लियस का पार्ट एकदम माने सेंट्रल पार्ट में ये ऑक्युपाई किया हुआ रहता है, सेंट्रल पोर्शन को ऑक्युपाई के सेल के सेंट्रल पोर्शन को ऑक्युपाई करता है न्यूक्लियस। जबकि प्लांट सेल में ये किसी सेंट्रल पॉइंट को ऑक्युपाई नहीं करके पेरिफेरल पॉइंट को भी ऑक्युपाई करता है, और अधिकतर ऐसा ही होता है। अब इसके बाद इसके अंदर जो है फिर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। अभी आपको हमने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म
साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो बाउंड्री के अंदर अगर हम देखें कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिल गए तो प्रोटोप्लाज्म हुए। अगर हमने न्यूक्लियस को अलग कर दिया, जिस तरह से हमने यहाँ पे अलग दिखाया है, ये जो न्यूक्लियस का पार्ट है, ये न्यूक्लियस और इसके डिफरेंट पार्ट्स है। अब न्यूक्लियस में जो पार्ट है, ये देखिए, ये न्यूक्लियर इन्वेलप मेम्ब्रेन है जो डबल होता है, बीच में गैप रहता है, जिसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस है, सेकंड पार्ट हुआ। न्यूक्लियोप्लाज्म है, थर्ड पार्ट हुआ। क्रोमैटिन है, जो फोर्थ पार्ट हुआ। और ये क्रोमैटिन व्हेन द सेल अबाउट टू डिवाइड इट इज नोन एज क्रोमोसोम। हम लोग जब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो उसको देखेंगे हम लोग। और उसके बाद ये पूरा पोर्शन जो है साइटोप्लाज्म। अब विद इन दिस साइटोप्लाज्म देयर आर प्रेजेंस ऑफ द लिविंग सेल ऑर्गेनेली एंड द अदर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट विद इन द मैट्रिक्स ऑफ द सेल, दैट मीन्स विद इन द साइटोप्लाज्म। और इसमें आप क्या देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे इसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे, इसके अंदर वैक्यूल को देखेंगे। प्लांट सेल है अगर ये, तो वैक्यूल बड़े बड़े इसमें दिखाई देंगे, समझे। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल और वो सारी चीज़ें इसमें आपको अंदर आएंगी। तो ये एक जो आइडिया हमको मिला वो यही कि देयर आर अगर कंपोनेंट पार्ट की अब अगर हम बात करें तो हमें इससे क्या समझ में आया कि देयर इज ए लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अगर हम इसे कहें लिमिटिंग मेम्ब्रेन, एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है इसमें, जो सेल को उसके लिमिटेशंस में रखता है, सेल को उसका अपना एक माने सीमा देता है, जो उसका बाउंड्री है ना। ये बाउंड्री अगर प्लांट सेल है तो 2 है, सेल मेम्ब्रेन भी है, इसको मैंने नहीं लिखा था। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हियर देयर इज ए लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इफ प्लांट सेल then there are 2 limiting membrane. The inner one is the plasma membrane, and the outermost is the cell wall. Now it is clear, this is the first component part. If we are talking the second important part, that is the cytoplasm, where we may see the cell organelles, living cell organelles, and the other non-living substances, okay. And the third important part is the nucleus. Third important part is the nucleus. So this is the different important component part of a cell. Now after knowing this fact, we come to know about these 2 limiting membrane. Now here just we have discussed with the diagram that what are the important part of the cell, and now I have written those parts here, like basic structure, or in the textbook you have seen what is the component part which made the cell. ये इस तरह से आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, उसी को देखिए यहाँ पर। तो फर्स्ट वन आई हैव ओनली हियर एडेड वन पॉइंट, दैट इज द लिमिटिंग मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या सेल वॉल हो, ये एक लिमिटेशन में सेल को रखता है, एक डेफिनिट इसको शेप देता है ना। तो ये जो लिमिटेशन है ये डिपेंड करता है उसके बाउंड्री पर। इसको आउटर बाउंड्री भी कहते हैं, इन्वेलप भी कहते हैं, न्यूक्लियर इस सेल का इन्वेलप भी कहते हैं, सेल का बाउंड्री भी कहते हैं, सेल का लिमिटिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिमिटिंग मेम्ब्रेन लिखा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल ओनली इन प्लांट सेल, एंड न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
or the cell membrane, which is also known as plasma lemma. It is the outermost membrane of the animal cell, but it is not the outermost of the plant cell, as because there is a tough, rigid cell wall is also present within the plant cell. That is the outermost boundary. Plasma membrane is a flexible and having the quality for the exit and entry of selected or selectively selected substances. That is why it is known as selectively permeable membrane. It is its nature and it is its function. It is not only protects the cytoplasm, it protects the, what is the function of the boundary? अगर आपके घर में भी बाउंड्री है, अगर आउटर मोस्ट बाउंड्री वाल है आपके घर का, कैंपस का, तो इसका फंक्शन क्या है? आपके घर का सुरक्षा करना, जो आपका मेन बिल्डिंग है, जो मेन पार्ट है घर का, उसका सुरक्षा करना। इसी तरह से ये अगर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है पूरे सेल का सुरक्षित रखता है, उसका सुरक्षा करता है। They can protect the entire content of the cell. What are the content of the cell? The two important content of the cell, that means the nucleus and cytoplasm. That means nucleus and cytoplasm. It protects the nucleus and cytoplasm. ये nucleus और cytoplasm को protect करता है। उसके बाद सेल टू सेल जो कुछ चीज़ों का एग्जिट निकलना सेल से, एक सेल से फिर किसी चीज़ का किसी दूसरे सेल से उस सेल में जाना, that means the entry and exit of the important substances. But it only allow some selected substances to expel out and to come in, and that is why it is known as the selectively permeable membrane. Now we may look the some important functions of this, and thereafter we shall discuss about the some important facts about the cell wall. Now look here, the important functions of plasma membrane. It gives a definite shape to the animal cell, as because it is the outermost membrane in case of the animal cell. The plasma membrane is semi-permeable membrane. Just I have written here the short form SPM, semi-permeable membrane. That is the semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. That means it allows some substances to pass through it, or it may disallow certain substances not to pass through it. It provides protection. आपको मैंने कहा ही था कि ये प्रोटेक्शन, इसका किसका प्रोटेक्शन? आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्म का, अंदर का सेल के प्रोटेक्शन, इंजरी से बचाता है, उसको प्रोटेक्ट रखता है। जस्ट आई हैव briefly written here, not in the full functions. Cell membrane are, it is very important part. Cell membrane are flexible. The flexibility of the cell membrane enables the cell to engulf in food and other materials from its surroundings, external environment or surroundings. Such processes is known as endocytosis. This is very important. And क्या आप बता सकते हैं, do you know which animal procure their food materials by this process? आप सोचिए और सोच के बताइए कि कौन ऐसा एनिमल है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, इस फंक्शन के आधार पे वो अपना फूड लेता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए क्या? अमेबा। इसे आप देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए मैंने सेल वॉल के मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है कि इन प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड नॉन फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और ये जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहता है लिपिड और प्रोटीन का, है ना। सेल मेम्ब्रेन मैं इसे
लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। ये तीनों जो मटेरियल्स का नाम मैंने लिया आपके सामने, जो सेल्यूलोज, सेल वॉल, understand, and second important materials is lipid and protein, the third. Understand, cell membrane are composed by lipid protein, that is also known as lipoprotein. Lipoprotein, all are this, that is the cellulose, lipid, protein, it is the carbohydrate, all are this organic, all are this organic substances. ऑर्गेनिक के माने इसमें कार्बन होंगे ही, हाइड्रोजन होंगे ही, ऑक्सीजन होंगे ही, अंडरस्टैंड। तो ऑल दिस थ्री आर द इम्पॉर्टेंट केमिकल substances that composed cell wall and the cell membrane or the plasma membrane. Now, similar to the fact of the plasma membrane, as like in case of the animal cell, the cell wall also give the definite shape to the plant cell. It protects the internal parts of the cellular part, and it can also withstand the osmotic pressure when they, as it is permeable, and that is why if there is a entry or the flow of water from the medium or from surrounding to the cell, it can withstand that pressure. Understand, this is the functions of the cell wall. तो ये सारे फंक्शन सेल वॉल हैं आपका, ये जो डिटेल में तो आपको बताया गया है, केवल मैं यहाँ पे ब्रीफ कर रहा हूँ आपके सामने। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन पे चर्चा करेंगे, सेल मेम्ब्रेन का और या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो रिलेटेड है आपके दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। जैसा कि आपको मालूम है, आपने पढ़ा भी है, और मगर जस्ट उसको मैं एक ब्रीफ में आपको बता दूं। पहले हम लोग इसका डिफिनेशन समझें। व्हाट इज डिफ्यूजन? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस, molecules from a higher concentration to the lower concentration, a higher region of concentration to a lower concentration region is known as diffusion. And it is diffusion maybe in case of the gas, in case of the liquid, in case of the solid, in all the three states of the matter. But when we are talking about the osmosis, it is also the movement, but it is the movement of the solvent or water only through the across the semi-permeable membrane. So this is the two different important things which are related with the functions of the plasma membrane or the cell membrane. Here we are talking first about the diffusion, that how where you have seen this type of processes, by these processes how the living organism benefited, किस तरह से उसको लाभ होता है इस प्रोसेस डिफ्यूज़न की तरह। बहुत सिंपल एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम लोग खुद का भी में देख सकते हैं। आप कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी में बन रहा है, विद इन द सेल देयर इज ए एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाई? एज बिकॉज इट इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट्स, देयर इज ए वेस्ट मटेरियल्स when produced within the cell, it must expel from the cell. When the concentration of the carbon dioxide will be greater within the cell in respect to the surrounding, then what will happen? Carbon dioxide from higher concentration, that means from the cell, it expelled out to the environment. Similarly, if you are talking about the intaking of the oxygen, that the same procedure will be followed. In case of the diffusion, you have seen this great example, and this is the best example during the process of respiration
or during the process of breathing, when you taking carbon dioxide, or the organism will take they will expel carbon dioxide, they follow the rule of diffusion. And by this process, not only the this gaseous section, but also the other substances can also move. And in this process, osmosis, there is a movement of solvent substances, that is water, from a higher concentration region to the lower concentration region through the semi-permeable membrane. And for this there are three different phenomena, तीन different event आपके बुक में बताया गया, आपको इससे पहले ही बताया गया है। वो पहले सॉल्यूशन को आपको तैयार करना है, सॉल्यूशन को किस तरह से आप तैयार करते हैं और उस सॉल्यूशन का किस तरह से सेल, किसी लिविंग सेल को अगर उस सॉल्यूशन में रखते हैं तो उस मीडियम से किस तरह से जो सब्सटेंसेस जो है सेल के अंदर जाता है या सेल से बाहर निकलता है, ये चीज़ को देखने के लिए आपको तीन तरह के सॉल्यूशंस को पहले देखना है। उन तीनों सॉल्यूशंस को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अलग से। नंबर 1 में आप पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये देखिए फर्स्ट। दूसरा आपका केस है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ओके। और तीसरा केस है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट केस में आप देखेंगे कि अगर मीडियम, इफ सपोज देयर इज ए मीडियम, इट इज द मीडियम and in this medium, the medium where higher concentration of water, और इसी मीडियम में सेल रखा जा रहा है, सेल को रख दिया आप, सेल को रखें किसी लिविंग सेल को, तो इस लिविंग सेल को जो आपने इस मीडियम में रखा है, ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसको कहते हैं? सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट, है ना, प्लस सॉल्वेंट। अगर आप इसका एग्जांपल इस तरह से ले लें कि अगर आप शरबत बनाते हैं तो उसमें शुगर, तो शुगर क्या हुआ? सॉल्यूट हुआ। अगर उसमें पानी डालते हैं, वाटर, तो ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो शुगर और वाटर का क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, जिसको आप शरबत कह रहे हैं। तो इस तरह से पानी कंसंट यहाँ पे जो है सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, तब ये सॉल्यूशन हुआ, तभी ना इसको हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्यों कहा जा रहा है इसको? इसका हायर कॉन्सेंट्रेशन है सेल से, ये सेल है, लिविंग सेल है, और लिविंग सेल के बाहर ये मीडियम है जिसको सॉल्यूशन में हमने डाला है। अब यहाँ पे देखिए, इस हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से क्या होगा? सेल जो है वाटर को गेन करेगा, सेल जो है वाटर को गेन करेगा, सेल जो है वाटर को गेन करेगा। तो ये सेल जब वाटर को गेन करेगा इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, जब उस मीडियम में रखेंगे सेल को, तो सेल सॉइल्ड अप होगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस हुआ। दैट मीन्स in case of the hypotonic solution, the cell will gain water। ये आप समझ लीजिए। इसके बाद आप इसके बारे में और डिटेल से तो आप समझेंगे। आइसोटोनिक कैसा होगा? इस केस में क्या होगा कि देयर इज नो एनी मूवमेंट एज बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम बोथ आर इक्वल, बोथ आर सिमिलर। दोनों, जब इधर का कॉन्सेंट्रेशन और इधर का कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर है, देयर इज नो मोलिकुलर मूवमेंट, तो कोई किसी तरह का कोई मोलिकुलर मूवमेंट नहीं होगा। और ये तो मूवमेंट इसीलिए होता ही है कि उसको इक्वलाइज कर सके, आइसोटोनिक ला सके। अब हाइपरटोनिक के केस में क्या होगा कि मीडियम में लेस है, रीजन ऑफ लेस कॉन्सेंट्रेशन, और सेल के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो सेल से जो है फ्लो होगा वाटर का। इस दूसरे केस में
जिसको हम लोग हाइपरटोनिक कह रहे हैं। तो हाइपरटोनिक के केस में सेल जो है लॉस करेगा वाटर को, सेल को, अगर सेल इसमें है तो ये वाटर जो है यहाँ से निकलेगा, सेल से निकलेगा एक साथ, ठीक है। तो निकल जाएगा सेल से, तो ये सेल जब इससे निकल जाएगा तो सेल जो है श्रिंक कर जाएगा, है ना, और यहाँ इस केस में सेल सॉइल्ड अप होगा। श्रिंक जब कर जाएगा उसे क्या कहते हैं, है ना, ये आप बताएंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आप पढ़ेंगे इसको, और इस रिवीजन के आधार पे आप देखेंगे कि क्या घटना है। ये 3 तरह का मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया, और इन 3 तरह के सॉल्यूशंस में अगर किसी लिविंग सेल को रखा जाता है तो उस सेल के साथ किस तरह से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, सेल से मीडियम से सेल के अंदर, सेल से मीडियम में किस तरह से होता है, ये आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, इससे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उससे रिलेटेड जो है फंक्शन से रिलेटेड। वी हैव स्टडीड everything which are outside the cell, like the cell membrane, like the cell wall, and some important molecules activity which includes the movement of the molecules like the osmosis, diffusion, etc. And we have also finished in our revision class the different discoveries event in the history of cell. But today we will enter inside the cell. What are the things which are present inside the cell? When we will talk about the animal cell, then after plasma membrane or after the cell membrane, what will be inside the cell? And similarly, when we will talk about the plant cell, then we have also what are the content within this cell and what are the content of within these cells. This is the plasma membrane or the cell membrane, and this is the cell wall or the plasma membrane. Both are present within the plant cell, and only a single surrounding membrane is present in the animal cell. So first we shall talk about the cytoplasm. You have seen that within this membrane bonded structure there are matrix or fluid substances within which there are presence of this nucleus and the cytoplasmic organelles and the other non-living substances. We will discuss all things. Just within this membrane there are presence of matrix or jelly-like or the fluid substances which is the place for the nucleus, which is the place for the other non-living substances, which is the place for the different living cytoplasmic organelles having the different structure and having the different functions. Now first we will look about the cytoplasm. Now look here, what is cytoplasm? Cytoplasm is the fluid portion of the cell present between the plasma membrane and the nuclear envelope. If you have an idea about the structure, then like you may have seen that this type of structure here there are presence of chromatin network, there are
nucleolus without any membrane, and nucleoplasm. This is the structure of the cell, and this the rest part is besides nucleus. All these portions are the fluid portion of the cell present between the plasma membrane. This is the plasma membrane and this is the nuclear envelope. So between the nuclear envelope, you may look here, the nuclear envelope and between the plasma membrane. These are the plasma membrane. So this is the plasma membrane, and this is the nuclear envelope, and may you have see here there are presence of this matrix. So this matrix, which consists of the three important part. Number one, cytoplasmic matrix. What is this cytoplasmic matrix? That is also known as cytosol. Understand? Cytoplasmic matrix or cytosol is a jelly-like semi-fluid within which there are presence of living cell organelle like mitochondria, like ribosomes, Golgi complex, lysosomes, etc., plastid. All these living cell organelle having the different structure and functions are embedded, are present within, are floated within this cytoplasmic matrix or cytosol. And there are also presence of the non-living substances, that is known as cell inclusions within this cytoplasmic. You well know that each and every functions which are related with the life are performed within this cell. That is why the different types of cell organelle and also the different type of substances which are present within the cytoplasm perform and help in the different vital activities of the life. May you see all those functions separately when we will study how the protein synthesis, how the process of biogenesis, that means the for the formation of the cell membrane, there are requirement of the lipid, there are requirement of the protein, how that will be fulfilled with the help of the endoplasmic reticulum. And similarly, there are the releasing of energy that will be performed by the mitochondria. Within the plant cell, there are presence of plastid, which possess the chlorophyll molecules that will helpful in the process of photosynthesis, and there are a lot of functions, all the functions, and also there are presence of the nucleus within this cell that will perform vital functions. All the activities, metabolic activities will be operated or performed with the help of this nucleus, and also there are presence of the genetic material within this nucleus. That's here, the first you have seen here the cytoplasmic matrix, and the second one the cell organelles, and the third one non-living inclusions. This is the structure, the summary of the cytoplasm. Now look here, the different non-living substances which are present within the cytoplasm. The cytoplasm contains various inorganic molecules such as water, sodium, potassium, salts, and various organic materials like carbohydrate, lipids, proteins, nucleic acids, and several enzymes. Whatever may be the requirement for the different activities which are related with the life, or whether it is the requirement for the living organelles like the mitochondria, like the ribosomes, like the endoplasmic reticulum, like the lysosomes. Similarly, there are also requirement of the some important chemical substances which comprises both the inorganic and organic, and all of this present within the cytoplasm, like lipids, etc., and several enzymes. Functions of cytoplasm. Here it helps in exchange of materials between cell organelles, the first function. The second important function, it is the site where certain metabolic activities also occur. Like here an example is given for you, that is the glycolysis. Actually the glycolysis is a process which is the
first and the common phase of cellular respiration. During the process of respiration, when there is a breaking down, oxidative breaking down of the glucose molecule takes place, that will happen into the two different phases. The first phase is known as glycolysis, which occurs within the cytoplasm. Here is the partial without involvement of the oxygen. There is a partial breaking down of the glucose molecule takes place. And in the second phase, that after glycolysis, that is the Krebs cycle, where the process completed. That means complete oxidative breaking down in case of aerobic respiration takes place. Whether the process may occur in presence of oxygen, that is the aerobic, or the process if occur in absence of oxygen, that is the anaerobic. But this phase is compulsory and this phase is common for both the aerobic and anaerobic. And the third important functions, it helps in intracellular distribution of molecules, enzymes and nutrients within a cell. So these are the some important functions. It is not only the revision. I have not summarized, but whatever may be the present within the syllabus, everything is here. Understand? Now we will move towards the second important part of within the cell, that is the cell organelle, that also includes the nucleus and the various other cytoplasmic organelles. First, we shall revise about the nucleus. Now, come to know about the nucleus. Let us see here a typical diagram of nucleus. In this diagram, the structure of nucleus, the nucleus surrounded by double membrane structure. May you can see here, this is the double membrane structure. That means nucleus is surrounded by double membrane structure. We will discuss the important parts of the nucleus, but before that, first we will know we will see the definition, the shape and the locations and the important parts of the nucleus in a very clear manner. Dear students, in this revision class, if you miss the things, then it is very difficult, as it is in a very detailed manner you have already studied. And now I would like to share with you the important points only. That is why you be careful in this regard. Like when we are talking about the nucleus is also a cell organelle. We are not talking about this structure, it is a cytoplasmic organelle, as because we have separated it. When we include the cytoplasm and the nucleus, then it is the protoplasm. And when we exclude the nucleus from the protoplasm, then it is the cytoplasm, and within the cytoplasm all the other different living cell organelles are present. That is why those organelles are known as the cytoplasmic organelles and also cell organelles. So this is the cell organelle, which is the largest cell organelle, and it is, what is its location? If you have an idea about the animal cell diagram and the plant cell diagram, then may you have seen there that in the animal cell, in the animal cell, it may present within the central part of the cell. Understand? But in case of the plant cell, it may present at the periphery, and that means not within the central part. That is why here it is written clearly, nucleus is the largest and the most important cell organelle in eukaryotic cells. You have also noticed here that I have mentioned here eukaryotic cells, as because you well know that a well-defined nucleus is not found in the prokaryotic cell. That is why it is
it is here written in eukaryotic cells, located generally in the center of animal cells and at the periphery of the plant cells. At the periphery of the plant cells. What is its shape? It may be oval or spherical in shape. What are the important parts? There are 4 important parts of the nucleus. The first important part is here, the double membranes which surrounded the nucleus. That is the protecting layer, just like that of the plasma membrane or the cell membrane for the cell, and for the nucleus there are presence of nuclear membrane. It is also known as nuclear envelope. Understand? And this envelope or the nuclear membrane is not continuous. May you have see here the pores. Here is the pore, here is the pore, here is the pore. That means it is not in continuous. And why this pore is present? It will allow the transportation of the substances from the cytoplasm to the nucleus and from the nucleus to the cytoplasm. As there are different types of things, substances are also very important for the other cellular part which are synthesized here, like we have been talking about the nucleolus. Then may we see that there are presence of the RNA and there are presence of the protein, and it helps in the ribosome synthesis. Now look, once again we come to our main point, that is what are the important parts. Very clearly there are 4 important parts. This is the first part, that is the nuclear membrane or the nuclear envelope, and the second important part is the nucleoplasm. Here nucleoplasm, that means this yellowish structure, that is this structure, may you see here, that is the nucleoplasm, just like that of the cytoplasm. Within the cell, within the nucleus, there are presence of nucleoplasm. It is also the matrix. And there are the third important part, that is the nucleolus. May you have see here, there are more denser than that of the nucleus. The nucleus is more denser than that of the cytoplasm, and here within the nucleus, the nucleolus is more denser than that of the nucleus, the other part, and that is the nucleolus. Here is the nucleolus. It is the third important part. And the fourth important part is the chromatin material, which comprising the chromosomes and the genes, that is the DNA and the other proteins. Here may you have now understood that there are 4 important parts of the nucleus. Depending upon these 4 important parts, this is a well-defined nucleus, and it is only present within the eukaryotic cells and eukaryotic organism. And as there is no well defined, that means all these parts are not present within the prokaryotic nucleus. That is why they may be called the undefined and not well defined nucleus, due to the lack of the envelope or lack of the cell membrane. If there is a lack of cell membrane, then there is a mixing of the cytoplasm, and then there is no existence of the nucleoplasm. And only there are presence of this nucleoid, that is the chromatin material, that is the genetic part of the nucleus in the case of the prokaryotic. We may see it what is the structure of the nucleus in case of the prokaryotic cell, and may you have look here the eukaryotic cell. And nucleus controls all the metabolic. That is the important, the basic functions which I have written here in a single sentence. Nucleus controls all the metabolic and genetic activities of the cell, and that is why it is known as the brain of the cell. Now see here one by one the important parts and their important functions. One thing may you see here also in the diagram,
this is the continuation of the nuclear membrane. There are presence of the endoplasmic reticulum. Understand? In continuation of the nuclear membrane, there is a presence of endoplasmic reticulum, and both the type of, maybe it when it in the diagram you may show in this way the presence of rough endoplasmic reticulum. Understand? And if you not put this dot marks, that is the indications for the presence of the ribosomes. That is why it is, maybe look here clearly, that if rough, then there is a presence of this dot like structure, and if it is smooth endoplasmic reticulum, it is without any this type of granules. Okay, it is clear now. Look here once again. The first part, nuclear envelope, are the nuclear membrane, which are the double and but not in a in continuity and not in continuous layer. It may be there are presence of several pore also. It acts as a barrier and separates the cytoplasm of a cell from the nuclear contents. It contains small pores which allow the transfer of selective materials from inside the nucleus to the outside. What will be here outside the nucleus? There are presence of the cytoplasm. That is why here it is written it allows the selectively materials transportation from inside the nucleus to the outside cytoplasm. You may have also seen here the matrix, the fluid parts of the nucleus, within which there are presence of the chromatin material. This is the chromatin material, intertwined entangled masses, which you thread-like structure, which you may see here. That is the chromatin material, and this is the nucleolus, which without any membrane present on one side of the nucleus. Understand? Within the nucleus, without any membrane, there are presence of nucleolus. So here the nucleoplasm and the nucleolus. It is a liquid matrix within which nucleolus and chromatin material are embedded. Within which chromatin material and nucleolus are embedded. May you write in a simple way, within which the chromatin material and the nucleolus are present. It is the nucleoplasm. Now, nucleolus, a small spherical body which are present on one side of the nucleus, is known as the nucleolus, and it is the part which are not surrounded by any membrane. Understand? And it is very important. It may be one or more in number and spherical in shape. Now, what is its function? The important function, it contains the protein, the ribonucleic acid, RNA, ribonucleic acid, and the protein, and it is helpful in the process of ribosome synthesis, and that is why it is also known as the ribosome synthesis factory. Understand? This nucleolus, I am talking about this nucleolus. All these parts which are present within this eukaryotic nucleus are not present within the prokaryotic nucleus. In the prokaryotic nucleus, you cannot see this one. That means the nuclear membrane. When there is no nuclear membrane, that means there is no existence of this nucleoplasm, there is no nucleolus at all, and only this chromatin thread, that is the genetic material, which is known as the nucleoid in case of the prokaryotic
cell is only present. Understand? And in this way we can differentiate between the prokaryotic and eukaryotic cell. Understand? Now come to know about the most important part of this nucleus, that is the chromatin material, which may you see here in thread-like entangled masses. Understand? Which at the time of the nuclear division became the chromosomes, and that is the chromosome, which is a rod thread-like structure where there are presence of the DNA, that is the gene, which is the hereditary material. Now look here, the last part, not the next, just we have talked about the three important parts: nuclear envelope, nucleoplasm, nucleolus, and the fourth important part is the chromatin material. The thin thread-like structure which you are looking here, intertwined mass of filaments present in the nucleoplasm. Just you have seen in the case of nucleoplasm, you have seen that the nucleoplasm is the matrix, the fluid matrix where the intertwined masses of chromatin materials and the nucleolus are embedded. That's why here it is written, the thin thread-like intertwined mass of filaments present in the nucleoplasm comprises chromatin materials. That means the nucleoplasm is the locations, the site for the presence of this chromatin material. Now I have written here 1, 2, 3 important points in regard to this chromatin thread, in regard to this chromatin materials, in regard to this nuclear reticulum, it is also known as. What are these 3 important points? Look here, the first one is here, the chromatin filaments. These chromatin filaments are composed of DNA and proteins. Okay, that means you may have seen here, you may have just see here in the previous part that in the nucleolus there are presence of the RNA, and here in this, within this chromatin thread you have seen that there are presence of DNA. That means the both DNA and RNA are here within the nucleus. DNA is the genetic material and contains all the information required for metabolism. All the information required for metabolism. Metabolism is not a single process. It is the process which comprising the 2 important phases, the constructive process and the destructive process within the cell. The constructive process means the formation of complex substances with the help of the simple substances, and again the conversion are the functions which may break the complex substances, and it may form into the simpler, from the complex to simpler, that is the destruction, that is the anabolism and catabolism. When there is a construction of the complex materials from the simple, that is the anabolism, that is the constructive phase. And when there is a destruction, that is the catabolism, that means conversion of complex substances into the simpler form, and this is the metabolism. And all the biochemical reactions, that means all the biochemical, bio means life, and the chemical reactions which occurring within the cell is the metabolism. Growth, reproduction and hereditary characters of an organism. This is the second important point in regard to the nucleus. The third important point here, during the process of cell division, the chromatin, this is the chromatin material which condenses during the process of cell division into distinct structures called chromosomes. And depending upon this, you may have studied, I have given you an idea in the general classes, that depending upon that there is a
different structures of the different shapes of the chromosomes visible, especially in case of the metaphase stage of the cell division. You may look the shape. Now, may just here I would like to give you an idea about the chromosomes. Just you have seen in the online classes the entire structure. Here is the chromosome. This chromosome is the rod-like structure, the thread-like structure, which are maybe constricted at some specific place. That the place where it constricted, that means it is just like that, this one, and there is a constriction, just like that, and here is constriction. This constriction is the centromere. This constriction is the centromere. This is the centromere. Now, at just look here, just that maybe this is the centromere, and here is the one part of the chromosome, and here is the second part of the chromosome. It is not the second part, it is actually the in continuation, but there is a constriction, and there are two arms which meet here at this place, at that the place is known as the centromere, and this arm is known as chromatid. Understand? In this way, you have also an idea that depending upon the centromere, location of the centromere, where the centromere located, the shape of the chromosome, the shape of the chromosome, the shapes of the chromosomes may be like acrocentric. You have studied this all in your classes. Just once again, I am writing here. The first one is the metacentric, and the second one is the submetacentric, and the third one is the acrocentric, and the fourth one is the telocentric. I have written here 4 different shapes of the chromosome. Now look the shape. Just you may talk about this one, metacentric. In this metacentric, may the both arms are equal. In the submetacentric, maybe one are just smaller, somewhat smaller than that of the, in case of the metacentric. In case of the metacentric, both arms are equal, and in case of the submetacentric, one arm is slightly smaller than that of the other. Here you may look very clearly. And in case of acrocentric, the one arm is very much smaller, whereas the other arm is very much larger. And in case of the telocentric, telo means end. That means at the end of the arm there are presence of the centromere. This is the telocentric. In this way, you just I have revised these things
for you, as you in a detailed way it is already discussed in the normal classes. Now after this, you may also, for you, may I also revise the cell division. The cell division, just in a very brief manner, may you look here, the cell division. The cell division. Cell division means the division of a cell. And if you're talking about the cell, that means you are talking about the nucleus and you are talking about the cytoplasm. And that is why when we talking about the cell division, that means we are talking about the division of nucleus and about the division of the cytoplasm. When we talking about the division of the nucleus, that means the karyokinesis. Karyokinesis. It is the phase for the division of nucleus. This is the phase of division of nucleus. That means when a cell divide, from each pre-existing cell, the cell divide, and when there is no division of cell, there is no possibility of the growth, there is no multicellularity or organization. And not only that, for growth, development, but also there are some other reasons also for the division of the cell. Here the first phase which you have seen, that is the karyokinesis. Karyo means nucleus and kinesis means division. That means the division of nucleus. Similarly, after just a division of the nucleus, there is a division of cytoplasm. So that is the cytokinesis. Cytokinesis. That means the division of the cytoplasm. The division of the cytoplasm. When there is a cell division, there are two important phases. The first phase is known as karyokinesis, during which there is a division of nucleus takes place, and the cytokinesis, during which there is a division of cytoplasm takes place. Understand? Division of cytoplasm. Now it's okay. Now look at the different types of cell division. There are three important types of cell division. The first one is amitosis. The second one is mitosis. And the third one is the meiosis. When we're talking about the amitosis, that means we're talking about the division of the cell within the lower categories of the organisms, like that of, and in case of the some specific type of cells also, like in case of our cells, when our WBC cell, that means the white blood cells will divide, it will divide on the pattern of the amitosis. And when a nucleus and the cytoplasm of an amoeba divide, and after the division, it is not only the case of cell division in the amoeba, but it is also an illustration of the reproduction. Understand? That means that the amoeba is a unicellular organism. If their cells will divide, then there is no multicellular organization. Obviously, it will show the two different individuals after the division. In this way, maybe look here, the types of cell division. Types of cell division. The first one is the amitosis.
amitosis. The second one is the mitosis, and the third one is the meiosis. Mitosis is also known as direct cell division. It is also known as direct cell division. Direct cell division. Actually, in a detailed way, not in your syllabus, it is not required to study in a detail, but just I have may manage it for your understanding. Amitosis, that is the direct cell division. Why it is known as the direct cell division? As because in this process, when nucleus divide, they cannot undergo any stages. In case of the mitosis, when nucleus will divide, it will follow the 4 different stages, like the prophase, metaphase, anaphase and telophase. Such type of phases will not be followed during the division of nucleus in case of the amitosis. That is why it is known as direct cell division. Okay, the result will be similar in both for the amitosis and mitosis, as because during the process of amitosis also a cell divide into the 2 daughter cells, and in that daughter cells the number of chromosomes will be similar to that of the parent in both cases. And this mitosis is known as indirect cell division. Indirect cell division, and also the somatic cell division, as because it takes place in the body cells or the somatic cells. That is why it is known as somatic. And why it is known as indirect? As because nucleus not directly divided, but it will follow the different phases or the different steps. Like that, what we have talked earlier, like that, prophase, metaphase, anaphase and telophase. That means there are 4 proper steps in case of the cell division. What are these steps? The prophase, number 2, metaphase. In this phase, the chromosome clearly visible. In this metaphase, at this metaphase stage, chromosomes will be clearly visible, which you have seen just earlier, that the different shapes depending upon the positions of the centromere. Metacentric and metaphase, and the third one is the anaphase, and the fourth one is the telophase. Now come to this side, meiosis. Meiosis is also known as reductional division or germinal cell division. Understand? In this case, what will happen? There are formation after division of the parent cell. There are formation of the 4 daughter cells, and in all these 4 daughter cells, the number of chromosomes will be half in comparison to that of the mother cell in that of the original cell. That is why it is known as the reductional division, as it occurs in the reproductive cells. That is why it is also known as germinal cell division. Here, which you have seen here, the different 4 phases. In case of the meiosis, it is not only the limitations, but also meiosis comprising the two different. First, it will be meiosis 1, meiosis 2
and in meiosis 1 again there is a prophase 1, metaphase 1, anaphase, and prophase 1 is again divisible into the 5 different substages, and meiosis 2 only divisible into the 4 different stages: prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. In the first phase, meiotic, there is a division, and also in case of the second, and altogether there are 4 daughter cells are the 4 nuclei will be formed, and in which the number of chromosomes will be reduced half in comparison to that of the parent cells. In this way we have seen that once again may you carefully listen that the type cell division having the 2 different phases, the division of nucleus and the division of the cytoplasm. Whether there is any type, maybe the type amitosis, the type mitosis, the type meiosis, in all these 3 different types that must be there is a division of nucleus and there is a division of cytoplasm, as because you will know that if the nucleus will divide, it will not exist without the supporting apparatus of the cytoplasm. Understand? And it is also known as some other terminology also useful for you, like the amitotic, mitotic and meiotic. Understand? It is also amitotic division, mitotic division, mitotic, and it is also known as meiotic. Understand? Also known as meiotic. Okay, so this is the nucleus and the important facts regarding the cell division. Now, in this revision session, we are in the last part. In the last part, we can summarize the important cell organelles. Here, the first one for you, like the endoplasmic reticulum. It is of 2 types, a smooth endoplasmic reticulum and the rough endoplasmic reticulum. When there are presence of the ribosomes, when there is attachment of the ribosomes with the endoplasmic ER, it is the rough. When there is no attachment of the ribosomes, it is the smooth. Characteristic features here in a very brief manner: network of double membranes found scattered in the cytoplasm, maybe rough endoplasmic reticulum with attached ribosomes, or smooth endoplasmic reticulum devoid of ribosomes. You have seen this diagram in the nucleus, and it also with the continuation of the nuclear membrane and with the scattered within the cytoplasm. Functions: provide mechanical support to the cell, serves as a channel for the transport of material from one part of the cell to the other. Rough endoplasmic reticulum facilitates protein synthesis. Smooth endoplasmic reticulum helps in lipid synthesis and various biochemical reactions. So this is a brief summary of one of the important cell organelle or the cytoplasmic organelle, that is the endoplasmic reticulum. With the help of this endoplasmic reticulum, there are formation of the cell membrane or the plasma membrane, that is the biogenesis. That process is known as the biogenesis. Now look about the second important cell organelle. Here are summary for the Golgi apparatus. It is also known as dictyosomes in the plant cells. In the form of granules, rods or filaments known as dictyosomes in plant cells, secretions of cell enzymes and hormones, the important functions, modifies, concentrates and transport the synthesized substances. The very important here, the mitochondria. The third important are minute rod-like structure with double membrane, biochemical factories where food molecules are oxidized and energy is released. That is why it is also known as powerhouse of the cell. Understand? So here we have seen
in the summary that all the important metabolic activities, functions, whether it is the biochemical processes or any other synthesis or the secretions process, all are related with the different types of cell organelles. Now look about some other important cell organelles. Now look here about the lysosomes. It is a bag-like cell organelles bonded by a single membrane, contains powerful digestive enzymes or tissue dissolving enzymes. Digest and destroy any foreign materials, digest worn out and poorly working cell organelles. And that's why it is also known as suicide packs of a cell. Now look here about the ribosome. There is no bonded membrane without any bonded by membrane. Smallest organelles contain RNA and many proteins, center for protein synthesis. It is the center for protein synthesis. Now look about some other cell organelles. Plastids. You will know that plastids are such type of cell organelles which are only present within the plant cells. One of the important cell organelles which are absent in the animal cell, that is the plastids. This is the largest cell organelles in the plant cells. Similarly, centrosome is such type of cell organelles which are not present in the plant cells. Plastids are of three different types depending upon the pigments. The first one is the chloroplast, important plastid, as because it possesses chlorophyll molecules which entrap the solar energy. That means it helpful in the process of photosynthesis. The second important plastid is the chromoplast, which provides color to the different parts of the flowers and the fruits. Maybe colorless or variously colored. Most common are green colored plastid known as chloroplast, bordered by double membrane and having their own genetic material, DNA, like that of the mitochondria. That means there are two different cell organelles having their own genetic materials, that is the DNA. The double membrane and having their own genetic material, DNA, like that of mitochondria. That's why I have written here like that of mitochondria. It means mitochondria also possess their own genetic material, DNA. Functions: imparts color to the different parts of the flowers and fruits. Chloroplast necessary for the process of photosynthesis, and leucoplast having no color, colorless plastid, store starch, oil and protein granules. Now at the last we have the two important points here. The first one is the vacuoles and the second animal cell and the plant cell differences. Look here about the vacuoles. Vacuoles are membrane bound fluid filled storage sacs. These fluid substances are known as the cell sap. These help plant cells to remain turgid and rigid due to the presence of cell sap. The presence of the fluid substances within the membrane bonded vacuoles are known as cell sap, and the membrane of the vacuoles membrane which are bonded by membrane, that vacuole membrane which surrounds the vacuole is also known as tonoplast. Here the difference between the animal cell and the plant cell, very easy point, and all the points are relevant to you. Like cell wall is absent in case of the animal cell, but the cell wall additionally present along with the cell membrane or the plasma membrane. The second important point, nucleus located at the center, whereas in case of the animal cell, nucleus is present in the periphery of the cell. If the vacuoles are present, it is smaller in case of the animal cell, and
the vacuoles are larger in case of the plant cell. Centrosomes are present which help in the process of cell division. In the case of the plant cell, there is no centrosomes. Plastids are absent in case of animal cells. Plastids are present in case of plant cell. That's why animal cannot photosynthesize, whereas plant can able to photosynthesize. Smaller than plant cell, the size of the cell usually smaller than plant cell of the animal cell, but in case of the plant cell, it is larger than animal cells. In this way, we have revised the important points related with the chapter number 5, the fundamental unit of life. Thank you very much.